परमंश परिव्राजकाचार्य सूत्र सदस्यमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव मिलने की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। नववेद भक्त वृंद की जय। All glory to the Srimad. All glory to the Srimad. All glory to the Srimad. Thank you very much.
recorded on the 4th of DC, class on the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 15th Chapter, text number 25, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 4th of December, 1973, in Los Angeles, California. Sakrajatan Sahagana Raghunathanvitam Giriparada Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jalokasam Jale Yadvan Jalokasam Jale Yadvan Mahando Dantya Yadun Yadupiranyonyam Yadun Yadupiranyonyam. Translation. O King, as in the ocean the bigger and stronger aquatics swallow up the smaller and weaker ones, so also the Supreme Personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged the stronger Yadu to kill the weaker and the bigger Yadu to kill the smaller. This is the theory of struggle for existence and survival of the fittest. The law of nature is like that the stronger overpowers the weaker. The stronger overpowers the weaker. In another place it is stated, Ahastani Sahasthanam Apadani Chatuspadam Nunam Mahatang Tatra Jiva Jivasya Jivanam. The living entity, they live by eating another living entity. Sahasthanam means those who are in man form, human form, they have got hands. So those who have no hands, just like the animals, they have got legs. They have no hands. So, ahastani, those who have no hands, they are food for the animal with hands. Mind that, animal. Those animal with hands, they are animal. Those are eating another animal. They are not human being. Although they have got the form of human being, they are not considered human being. Human being means when he is civilized, cultured, and then he is human. If he is not civilized, he is not cultured, simply having two hands, he is animal. So that culture begins, civilized, in the Aryan families. Therefore they are called Aryans, advanced. Aryan means advanced. People want to group themselves in the Aryan family. Just like Hitler, he declared himself only, the Germans are only Aryans, and Jews are not Aryans, like that. You can manufacture. But real Aryan means one who is advanced in spiritual consciousness. He is Aryan. Not a class of men. Aryan means he is advanced in spiritual consciousness. The Aryan civilization is so eulogized because in the Aryan civilization there was Vedic culture. That is Aryan. Otherwise, ahastani sahasthanam, and that is apadani chatuspadam. This is going on, struggle for existence. Human being, so-called human being, naked in the jungle, eating animals. The animals have no legs. The Darwin's theory is
that there was no civilized man, but gradually it has developed. It is not very clearly explained. He does not know what is the evolution. Evolution means to become civilized. That is evolution. Or to advance in Krishna consciousness. That is evolution. So, this is the law of nature, that the weaker section is devoured by the stronger section. So here it is said, Jalokasang jale jadvat. In the water, there are so many aquatic animals. The struggle is going on. The stronger fish eating the weaker fish. This is going on. That is the law of nature. Therefore, meat eaters, so long they are like animals, they can go on with this nature's law. You are man, you are stronger, therefore weaker animal, cows and goats, you slaughter them. They are stronger bodily, but they have no intelligence. Man has got intelligence. If you misuse your intelligence in that way, you can do that. That is nature's law. But human being means culture, advanced in spiritual consciousness. That is human. So this consciousness is developing gradually. So unless you come to this platform, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvannam maya system gunakarma vibhagasa. Then you must divide the society. Amongst the animals, there is no division. Everyone is on the same status. No, because the aim is how to develop Krishna consciousness. Therefore, there must be some system. So that system, unless one comes to the platform of this Varnashram Dharma, 4 divisions, social division and 4 spiritual division, and those divisions are made by Krishna himself. Maya system, he says, that is natural, but by such an institution we can gradually understand what is the aim of life. Varnasamacharavata purushena parapuman Vishnu aradhate pungsang nannat tattoshu karanam. What is the aim of life? The aim of life is that we are now detached from God. This is our position. Material life means detached from God, detached from Krishna. So this detachment is the cause of suffering. Mukho bahu urupadebhya Purusasya asamaishaha jagnire chattaravarna vipradaya guna prithak. We are different parts and parcels of Krishna, God. So we must act accordingly. Just like my hand, hand is there. If the hand is in proper place, you can act nicely. But if I cut the leg and make hand, or hand make the leg, and then it is all lost. All lost. One must act according to his qualification. That according to that qualification, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they are described in the Bhagavad Gita. This Brahmana means these are the symptoms. Sattva samadama titikha arjava Jnanam vijnanam astikam brahma karma sabhavajam. This is human civilization. We must train people in such a way that we must see that what is his quality, according to quality. Just like a physician gives medicine according to the symptom of the disease, then it is cured. Not that any medicine. In the drug house, there are so many medicines. You cannot say any medicine will do. No.
It is the physician who will pick up the real medicine and he will administer to the patient, then he will be cured. So this varnashram dharma means chaturvarnam maya system gunakarmi bhupakasa, from the animal position of the human being to bringing to the human position. That is varnashram. That's the school, college, to become graduate means to become distinguished from the fools and rascals. Similarly, human being does not mean the struggle for existence as though one big fish is eating another small fish, another is... No, that is not human. That is natural, but you have to rectify the natural position for realization of the utmost aim of life, that is human life. Not to treat like animals. Sayavo go khara. So, that spiritual consciousness begins when one understands that his soul is not this body, his spirit soul. Aham Brahmasmi. Brahma means the spirit soul. And there human civilization begins. Otherwise, anarja justam. Krishna, when Arjuna was declining to fight, he chastised him that this denial is anarja justam. It is befitting for the anarja, those who are not advanced. One must do his duty. You are a Kshatriya, your duty is to fight, to give protection to the citizen. So why you are denying this? So here the example is given, Jalu kusang jali jadvat mahanta padanti. When the Jodhus became very powerful, because they are descendants of Krishna, so they were fighting anywhere, conquering anywhere and everywhere. They are victorious. So that was Bhubhara. Bhubhara means burden of the world. When one becomes extravagant and misuses his power, that is burden of the world. You cannot misuse it. You get power by the grace of God, by the grace of Krishna. If you misuse it, then you become a burden. But as soon as there is burden, then it is dharmasya glani. Krishna says, jada jada hi dharmasya glani bhavati. As soon as there is misuse of power, tadatmanam srijamaho, he comes. So Jaduvamsa, Krishna's dynasty, when Krishna saw that they are becoming so powerful that unnecessarily they are fighting, therefore to kill them, that fighting spirit was engaged for fighting amongst themselves one another. And therefore they are fighting, there is necessity. But if you misuse that fighting spirit, just like at the present moment, the politicians, as soon as they see that they cannot manage things, and in the country there is confusion, they declare some war, so that the whole attention may be turned that side and there will be no agitation of the internal dissatisfaction. This is diplomacy. This is diplomacy. We have seen it in Pakistan. As soon as they cannot rule over, they cannot, but that slogan, or the Hindus are our enemy, the Kashmir has taken, attention is diverted, and they declare war, and again become defeated. So, this kind of war is not required. This kind of war is not required. But war is there already, struggle for existence. Just like here, when Krishna saw that the Jodhu dynasty is becoming, on the strength of Krishna, they are becoming so powerful that they are unnecessarily fighting. So Krishna wanted that his family may not be degraded further. So he wanted to kill them. And who can kill them?
No outsider can kill them. They are Krishna's descendants. That is not possible. Therefore, Jadun Jadubhi Ranannam Bhuvaram Samya. They fighting amongst themselves, they reduce the burden of the world. Krishna is exhibiting how things are going on. As soon as there will be burdensome, there will be some war, pestilence, famine, and finish. And finish. You don't require to reduce population by contraceptive method. By nature's way, the whole cell it will be reduced. Bhubhara, Chandra. By nature's way. Why should you commit sinful activities? You don't beget children unnecessarily and don't kill them. That is religion. That is civilization. Why should you unnecessarily produce children like cats and dogs? Their Shastra says that don't become father, don't become mother. If you cannot save your sons from death, this is the responsibility. This is father's, mother's responsibility. Namo chayedja samopitavitam pita nasasyad janani nasasyad. One should not try to become father, one should not try to become mother if the parents cannot save the child from imminent death. That is the responsibility. And who is that father? Who is that mother? This is Vedic civilization. My Guru Maharaj used to say that I am a sannyasi, I am not married, neither I am meant for marrying, but if I can produce Krishna conscious children, I can marry 100 times. That is the response. Don't produce cats and dogs. Produce Krishna devotees, then you marry. Otherwise, don't marry. This is Vedic. Marriage is not meant for sense gratification. Marriage is meant for producing nice children, Krishna devotees. So that is our aim. Our aim is not to produce cats and dogs. There are so many cats and dogs. The world is not happy. Now there is need of producing nice children, sober, gentle, devotee of Krishna, cool brain, good character. These things are required. So, they were not unwanted children, these Jodhus. This is a mixture only. They came, they are all demigods. They descended just to fulfill Krishna's mission. Krishna's mission, Krishna came down. So, all the confidential servants of Krishna, they also appeared to help him in different. So when Krishna wanted to go, he wanted to go with the descendants also who came to help him. So this is make sure that the Jadus fought amongst themselves to take the matter. Otherwise, superficially, when one becomes unnecessarily powerful, disturbs the world situation, is a burden. Is a burden. That kind of burden is vanquished by Krishna's desire, will. There must be some catastrophe like war, pestilence, famine, and everything will be finished. So our duty is, the human form of life, duty is that we should know that we are eternal servant of Krishna, and forgetting our relationship, we have come to this material world, and there is struggle for existence, beginning aquatics, Jalajanova, there are 900,000 species of aquatics. Who is that physiologist who can know 900,000 species of aquatics? But in the Shastra you will find exactly, it doesn't say 901 or 899, no, 900,000 species there are. So, because we are in the material contact, and according to our desire, we are having different types of body.
aquatics, trees, birds, like that. This is our botheration. Janma mrityu jara vyadhi, in this way. This is our problem. Therefore, human civilization means when people are interested to solve the problems. That is human civilization. Otherwise, animal struggle for existence. There is no human side, there is only animal side, struggle for existence. The human life is not for struggle to become sober, not like animals. The animals are engaged whole day and night for searching out food and sense gratification, sex. That is not human civilization. Human civilization is meant for tapasya. Tapasya. You should know what is my responsibility. Tapasya brahmacharjena samena damena va. One should learn how to practice tapasya. Tapasya. This is tapasya, little tapasya. No illicit sex, no gambling, no meat eating, and no intoxication. This is tapasya. Little tapasya. Who is dying? Without meat eating, we have got so many students, there are so many Vaishnavas, they do not eat meat. Are they dying? This is only bad habit. But if you practice little, in the beginning, it may be little troublesome. It is not troublesome. I am thinking, just like one gentleman came. We cannot give up meat eating. I want, but I cannot. The practice. Abhyasa yoga yuktena chetusana. Anything you practice, habit is the second nature. So, in association of the devotee, if you try to practice brahmacharya, not to have sex life without any purpose, that is called brahmacharya. Brahmachari does not mean celibacy. Brahmachari means who does not use sex life for any other purpose than begetting nice children. That is brahmachari. So this is, everything should be systematic, otherwise there will be chaos. There will be chaos, nobody will be happy, and that is described in the Bhagavad Gita, Narakayava kalpate, the whole world will be hell. That has become now. The whole world has now become hell. So, the Krishna consciousness movement is very important movement. It is overhauling the whole human, social, political, religious. So, those who are engaged in Krishna consciousness movement, they should be very, very responsible, sober, try to understand the situation and take the shelter of Krishna, and everything will come very successful. Thank you very much. हरे कृष्ण। तो आज अपने श्रील प्रभुपाद से पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक का क्लास सुना। On the Srimad Bhagavatam, 15th chapter, text number 25. तो प्रभुपाद शुरुआत में बोल रहे थे प्रकृति का कुछ नियम है। क्या प्रकृति का नियम है? द लॉ ऑफ नेचर। व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? प्रकृति का नियम क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम, that every living entity is a prey for another. प्रभुपाद कहते प्रकृति का नियम है द स्ट्रॉन्गर ओवर पावर्स द वीकर। जो शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर हावी होता है। ये प्रकृति का नियम है। कैसे दिखता है? जो जानवर है, देखो एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है। 2 हाथ का जानवर वो खाता है। हरि बोल। जो जानवर खाते हैं वो कौन है? माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो जानवर खाते हैं वो असुर हैं? असुर नहीं बोला माता जी, जो 2 हाथ वाले जानवर है वो कौन है? जो जानवरों को खाते हैं वो जानवर है। मैंने ही बोल दिया। प्रॉपर दोज हु आर ईटिंग अनदर एनिमल्स दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। जो जानवर खाते हैं वो आदमी नहीं, मनुष्य नहीं है, वो जानवर ही हैं। 2 हाथ हो गए तो क्या हो गया? प्रभुपाद करे 2 हाथ होने से क्या फर्क पड़ता है? जानवर ही है, क्योंकि जानवर खाते हैं। हरि बोल। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि अगर कोई मनुष्य के समाज में कोई अगर जानवर खा रहा है तो वो संस्कृति नहीं है, इट इज नॉट सिविलाइज्ड, है ना, वो कल्चर्ड नहीं है। प्रभुपाद कह रहे थे केवल 2 हाथ होने से आप जानवर ही हैं। ठीक है। आर्यन किसको बोलते हैं? आर्यन किसी बच्चे का नाम नहीं है। आर्यन किसको कहते हैं? सुजय गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। आर्यन मतलब एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। वैदिक सभ्यता को आर्यन सभ्यता कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि संस्कृति शुरू कहाँ से होती है? ये आर्यन परिवार होना चाहिए। ये नहीं कि हिटलर ने जैसे अपने आप को आर्यन डिक्लेयर कर दिया। वैदिक सभ्यता जहाँ है वहाँ पर इतना इसका गुणगान है आर्यन, एक आर्य व्यक्ति का। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था अनार्य दुष्टम, ये अनार्य समान कार्य मत करो। हाँ, तो ये अनार्य नहीं बनना है, सबको आर्य बनना है। हरि बो हो। इवोल्यूशन, मनुष्य के विकास को क्या बोलते हैं? कैसे मनुष्य का विकास मतलब क्या है? इवोल्यूशन जो डार्विन बोला था, प्रभुपाद बोले डार्विन को क्या पता है, गलत बोला। इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन होना चाहिए जसबीर प्रभु। So Prabhupada says that there should be a system through which we should get evolution. So Prabhupada gave example of varnashram dharma. वो बहुत आगे आया प्रभु, थोड़ा आगे आया, थोड़ा आगे आया। Probably evolution means become civilized or to become Krishna conscious. ये पहले प्रभुपाद ने यहाँ से शुरू किया। हरि बो। ठीक है, माइक जसबीर प्रभु को दो। तो प्रभुपाद ने बोला अगर आपको मनुष्य का समाज को अच्छी तरह से करना है, बनाना है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण ने क्या बोला? So Prabhupada से कृष्णा ने वर्णाश्रम धर्म हमें दिया है और वो हमें फॉलो करना चाहिए। बिकॉज Prabhupada गिव एग्जाम्पल ऑफ हैंड एंड लेग। अगर पाँव काट के हाथ की जगह लगा दें, हाथ काट के पाँव की जगह लगा दें, सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वैसे ही अगर वर्णाश्रम नहीं, जो अपने क्वालिटीज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल डिस्टर्ब। सो कृष्णा हैज मेड दिस सिस्टम। एक प्रकार का डिवीजन क्या है? 4 पैर वाले, 2 हाथ वाले, है ना, 2 पंख वाले। ये डिवीजन तो जानवरों का डिवीजन है। मनुष्य का समाज का डिवीजन होना चाहिए। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्णाश्रम जब आएगा तब जा पर क्या होगा? तब कृष्ण भावना भावित सब हो पाएंगे। वो समाज अच्छा समाज है। हरि बो। प्रभुपाद ने एक डॉक्टर का उदाहरण दिया, डॉक्टर और दवाई का। वो किस लिए दिया था? किसको याद है? रेणुका माता जी को दो। हरे कृष्णा। जैसे डॉक्टर डिसीज़ का सिम्टम देख के पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं, वैसे हम विलिंगली नहीं बोल सकते कि इतनी सारी मेडिसिन है, इसमें से मैं ये वाला अपनी चॉइस से मैं ये वाली लूँगी। सो डॉक्टर हमें गाइड करते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, वही मेडिसिन हमें लेना होती है। सो सिमिलरली हम कहाँ पर हैं, हमारा जो भी प्रॉब्लम है, अगर हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो सिम्टम्स कैसे आएंगे, तो ये भी हमें गाइडेंस से पता चलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य का समाज ये केवल संघर्ष करने के लिए नहीं है। एक छोटा बड़ा, जो छोटे को खाएगा बड़े को खाएगा। मनुष्य का समाज किस लिए है? वर्णाश्रम धर्म के लिए। हरि बो। आध्यात्मिक चेतना का मतलब क्या है?
क्या होना चाहिए उस व्यक्ति में? आध्यात्मिक चेतना है इस व्यक्ति की, क्या होगा उस व्यक्ति का? सिद्धेश प्रभु को दो। he will be thinking that he is eternal servant of Krishna. कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये होना मतलब आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ है। हरि बोल। तो प्रभुपाद कहते बर्डन, भार। हम भार कब बन जाते हैं? भुईला भार म्हणतात मराठीत, भुईला भार। ये भार कब बन जाते हैं? बैक बेंचर्स कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा, आज क्या हो गया? भार कब बन जाते हैं हम लोग? पवन प्रो को दो। When there is excessive of power and that power is abused or misused, then dharmasya glani happens and that is wait, उसको आगे का मत जाओ, आगे मत जाओ। बस बर्डन कौन है? प्रभुपाद कह रहे थे कृष्ण की कृपा से आपको शक्ति मिलती है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू गेट पावर, और व्हेन यू मिसयूज दैट पावर, जब आप उस पावर का मिसयूज करते हो तो आप क्या बन जाते हो? भूइला भार, अभी बर्डन बन जाते हैं। मिला कृष्ण की कृपा से, लेकिन उसके बाद बर्डन बन जाते हैं। हरि बोल। अभी जब ये भार बन गए, अपनी शक्ति का, कृष्ण से प्राप्त हुई शक्ति का गलत इन्होंने दुरुपयोग किया। क्या करते हैं कृष्ण उसके लिए? दीप्तिमान जी। यदुस when वो लोग जब पावर दिया था, they were fighting among themselves. नहीं, they were fighting. So Krishna made a plan कि उनको they started कि you fight among yourself. तो वैसे ही एक मिनट, I forgot the question. Question क्या था प्रभु जी? जब ये मिसयूज ऑफ पावर होता है तो कृष्ण क्या करते हैं? हाँ, तो देन वो भार को निकालने के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सो उस तरीके से भार हम निकाल सकते हैं, बट नॉट बाय कमिटिंग सिंफुल एक्ट्स। नहीं, वो बहुत आगे चलेगा आप, ठीक है। कृष्ण ने तदात्मानम सृजामि अहम, फिर मैं आता हूँ बीच में। कैसे आ सकते हैं कृष्ण? एक तो स्वयं आएंगे, या तो कृष्ण ऐसा कुछ करेंगे, इन दोनों को ही लड़ाता हूँ। प्रभुपाद एक अलग जगह उदाहरण देते कि स्कूल में टीचर क्या करता है, दो बच्चे नालायक हैं तो क्या करते हैं, दोनों को बुलाते हैं, बोलते तुम एक दूसरे के कान पकड़ो, अभी ये इसका कान खींच रहा है, वो उसका कान खींच रहा है, अभी ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो। तो कृष्ण ने क्या किया, यदुओं को अपने में भिड़ा दिया। इनको तो ऐसा कुछ हो, इनके ऊपर कोई जीत नहीं सकता, और ये दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, अभी मेरे, तो इनको निकाल देते हैं। हरि बोल। तो प्रभुपाद ने कुछ बताया, पॉलिटिशियंस डाइवर्जन। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्रभुपाद ने कुछ तो दिखाया, सिखाया। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी, फाइटिंग इज नेसेसरी। प्रभुपाद ने बोला लड़ना नेसेसरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण ने एक प्रकार से लड़ाई करवाया और पॉलिटिशियन एक प्रकार से करते हैं, इन दोनों को एक नहीं समझना, इसलिए उदाहरण था। चित्रलेखा सखी महाराज। Politicians they create internal war. एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान कुछ क्यों करते इंटरनल वॉर नहीं बोला? हाँ ठीक है, हाँ चलिए। फिर एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान ने बोला कि हिंदूज आर अवर एनिमीज करके फिर फाइट क्रिएट कर दिया। जब भी पॉलिटिशियन लोगों को अपना घर बराबर से मैनेज करना आता नहीं, काम बराबर चलता नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं तो वॉर डिक्लेयर हो, किसी के ऊपर वॉर कर दो। अभी जनता क्या है, अरे हम हिंदू है या हम मुस्लिम है, यार इसको मारो, उसको पकड़ो, उसको करो, है ना। तो अभी मुझे कोई तो बता रहा था कि अरे 2014 से एक भी दंगा नहीं हुआ। मतलब पहले कौन दंगे करा रहा था?
अगर अभी दंगे नहीं हो रहे, कोई बम नहीं फूट रहे, फिर पहले बम बाहर वाला फोड़ता था, अंदर वाले फोड़ते थे, इतने बम फूटते थे। तो पॉलिटिशियन लोग क्या करेंगे, वैसे कृष्ण ने नहीं किया। और वैसे उसी प्रकार अगर फाइटिंग स्पिरिट गलत इस्तेमाल किया तो क्या करेंगे, फिर भगवान बीच में आते हैं, बोला अब तदात्मानम सजामि हम। हरि बोल। एक रिस्पॉन्स, उत्तरदायी माता या पिता बनने का अर्थ क्या है? नरेंद्र दालमिया। हरे कृष्णा, एक उत्तरदायी माता पिता बनने का अर्थ है कि जो भी अगर पुत्र या पुत्री हो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तभी वो उत्तरदायी माता पिता बन सकते हैं। और कुछ? एक उत्तरदायी माता या पिता बनने का अर्थ क्या है? 2 चीज बोला था प्रभुपाद ने। और कोई नया हाथ? ठीक है, उत्तर सही था, लेकिन कुछ और भी बोला था। हाँ प्रभु, इधर पीछे दौड़ के they should be able to save their son from death. क्या? थोड़ा हिंदी में बोले, इंग्लिश समझते नहीं। उत्तरदायी माता पिता मतलब वो अपने बच्चों को मृत्यु से बचा सके। प्रभुपाद ने सबसे पहले चीज बोली, डोंट बिगेट चिल्ड्रन अननेसेसरली एंड डोंट किल देम। ये पहला चीज। उत्तरदायी माँ बाप बनने का मतलब कुत्ते बिल्ली के जैसे बच्चे पैदा नहीं करने। बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ हैं, प्रभुपाद कह रहे थे, कम है क्या? फिर उसके बाद बोले पिता मत बनो, माता मत बनो, जब तक आप अपने बच्चों को मृत्यु से नहीं बचा सकते तब तक माँ या पिता नहीं बनना है, जब तक मृत्यु से अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। हरि बोल। प्रभुपाद बोले मेरे गुरु महाराज इसके लिए कुछ कहते थे। क्या कहते थे उनके गुरु महाराज? भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे? चैतन्य प्रभु को तो क्या कहते थे भक्त शांति ठाकुर? बोलिए। हाँ, भक्त सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि अगर कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन है तो मतलब यू कैन बी 100 ऑफ चिल्ड्रन इफ यू आर गिविंग कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन टू वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। वो कहते थे अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मैं विवाह नहीं किया और मैं विवाह के लिए बना भी नहीं हूँ। Neither I am meant for marrying, ऐसा लिखा है यहाँ पे। पर क्या बोले थे? पर अगर मैं कृष्ण भावना भावित बच्चे अगर पैदा कर सकता हूँ, मैं सैकड़ों बार विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन मैरी 100s of times, ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले, है ना। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद कहते हैं, ये उत्तरदायी होना कहते हैं इसको। हरि बोल। आखिरी में ये यदुओं का झगड़ा करना, एक दूसरे को मार डालना, इस प्रकार प्रभुपाद ने बोला सब शो था। कैसे शो था? सब शो कैसे था? प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया इसको। सब मेक शो था, बोले मेक शो था, सब शो था। कैसे शो बन गया सब कुछ? सब एक्सप्लेन करने के बाद प्रभुपाद ने इतने सुंदर लेसन निकाले और आखिरी में बोला कृष्ण ने जो भी किया वो सब शोबाजी थी और कुछ नहीं थी। कोई और नहीं। सुजय गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। ये भगवान की लीला में उनके पार्षद उनके साथ आए थे और उनको और कोई बाहर से कोई नहीं मार सकता है, तो अंदर ही अंदर करके सबको वापस सारे देवतागण आए थे जो कृष्ण का मिशन था, जो कृष्ण का इच्छा था उसको पूरा करने के लिए आए थे। सब कोई भगवान के क्या है पार्षद थे, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। और जब काम हो गया, जब इनका कृष्ण का जाने का टाइम आ गया
तो इन्होंने क्या किया, शो क्या था, सब कुछ सबको अपने आप में लड़ाया और अपने आप निकाल के लेके चले गए। सब शो था, प्रभुपाद बोल रहे इस प्रकार। हरि बो। तो प्रभुपाद ने क्लास को एंड किया कि ये मनुष्य का जो सभ्यता है ये तपस्या के लिए बना है। हमारा उत्तरदायित्व क्या है ये समझना है। हाँ, किस प्रकार ये तपस्या करना है। और तपस्या का अर्थ है 4 चीज़ें। अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं है, मांसाहार नहीं है और किसी प्रकार का नशा नहीं है, है ना। प्रभुपाद करे कोई मर रहा है क्या मांस नहीं खाया तो, इज देयर एनीबॉडी डाइंग नॉट ईटिंग मीट, है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत का जो ये संस्था ये क्या कर रहा है, ये पूरे मनुष्य समाज को बचा रहा है, सबको कैसे उत्तरदायी बनाकर। हरे कृष्ण। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।